It's my proud privilege to be speaking to you, all of you, and I consider it as a great honor to be coming here and speaking to all of you. ये जो इस विद्यालय के प्रांगण में मैं यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले आप सब विद्यार्थियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स जो कि किसी भी स्कूल का बुनियाद है, और शिक्षकगण कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। They are the revered teachers, आदरणीय शिक्षकगण, जिनके आशीर्वाद से आप सब लोग फलेंगे फूलेंगे और जिंदगी में अपने मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आज जो ये ज्ञान आपको दे रहे हैं, उसी के बदौलत आप प्रतियोगिताओं में सफल हो करके, और मुझे पता चला है और मुझे इस बात का आभास और एहसास है कि विद्यापति स्कूल का एक गौरवमय इतिहास है, और वर्तमान में भी विद्यापति स्कूल के छात्र छात्राएं they are doing very well in all walks of life, discipline, and its performance is improving every day. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप अच्छे स्कूल में हैं, अच्छे माहौल में हैं, और अगर कड़ी मेहनत करेंगे और दिल में अपने मंजिल के विषय में ठान लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे, आप अपने जिंदगी में सफल हो सकेंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी अभिलाषा है, और यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आपको मैं बता दूं कि विद्यापति झा जी जो कि हमारे स्कूल के अग्रणी रहे हैं, पढ़ाई में, खेलकूद में, उनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है। डिबेट डिक्लामेशन में, ड्रामेटिक्स में शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो विद्यापति जी जिसमें आगे नहीं थे, इसीलिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और वास्तव में I am true to every word that I have spoken. He was a role model then in 1977. He is a role model in 2022 as well. ये हमारे साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी गए। मैं लीमा स्क्वाड्रन में था, ये ब्रावो स्क्वाड्रन में थे, मगर नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंकिंग विद्यापति जी ने 20वां रैंक स्थान प्राप्त किया और में निकाला। और नंबर 2 पर मेरा रैंकिंग था, जो कहीं 45-50 के रैंकिंग में था ऑल इंडिया लेवल में।
Today he is an entrepreneur, he is an educationist, he is giving back to society. At our stage in life, we should be in giving mode, and nobody is contributing more to the society from our whole batch as much as Shri Vidyapati Jhaji, who is really doing a yeoman service. जिस आइडियोलॉजी से इन्होंने इंडियन आर्मी के अफसर पद को त्याग कर, इनके दिल में देयर वाज ए बर्निंग एम्बिशन कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते, कुछ कर गुजरना चाहते, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र में ज्ञान की ज्योति जलाना चाहते हैं, अलग जगाना चाहते हैं। आज 45 साल के बाद मैं देखता हूं कि विद्यापति झा जी जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के ब्रावो स्क्वाड्रन में थे, अफसरी को त्याग करके इस कठिन मार्ग को चुना और आज वो एक सफल संस्थापक हुए हैं। तालियां। और कहते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन। तो जो इनका बुनियाद, इनके व्यक्तित्व की जो नींव है, वो इन्होंने ग्राउंड के ऊपर सफलीभूत किया। और जो हमारे स्कूल में बोलते थे कि विंध्य सतपुड़ा की छाया में है चंबल की घाटी, कलकल करती धार नर्मदा वीर बेतवा की माटी। इस माटी में वही आइडियोलॉजी को कार्यान्वित करके आज विद्यापति झा जी ने अपने सपने को साकार ही नहीं किया, परंतु इस क्षेत्र के शिक्षा के प्रचार और प्रसार में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में निभाते रहेंगे। आप में से हर एक विद्यार्थी इस लायक है। जब मैं आपके जैसा विद्यार्थी था तो इतना तेज नहीं था, इतना होशियार नहीं था, मगर जब मैं आपको देखता हूं यहां बैठे हुए, तो एक चीज हो सकता है आपके मन में कोई शंका हो, लेकिन मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आप में से हर विद्यार्थी, चाहे फ्रंट रो में हो या लास्ट रो में, चाहे ये लड़की या वो लास्ट में बालिका, इन सब में वो काबिलियत है, वो मादा है कि वो अगर सच्ची मेहनत करे, लगन करे, तो एक न एक दिन वो किसी भी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर के किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा में सफल होकर के और आगे बढ़ सकते हैं और अपने मंजिल को पूरा पा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। धन्य है ये भूमि पदुमकेर का और धन्य है ये स्कूल जिसमें मादा है, जो एक सही वातावरण दे रहा है। अगर आप इस मौके को समझ लें, इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें, तो आप में से हर एक विद्यार्थी अव्वल दर्जे का अफसर बनने का हौसला अगर रखे तो वो जरूर ये उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। और इससे भी ऊपर है, धन्य है ये टीचर्स, शिक्षकगण और यहाँ का मैनेजमेंट, जो कि इस एरिया
एरिया में, इस क्षेत्र में इतना अच्छा स्कूल और इतना अच्छा अवसर आपको दिया है। मैं वाहिगुरु से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि ये स्कूल दिन रात दोगुनी चौगुनी तरक्की करता रहे और उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। धन्यवाद, धन्यवाद। My thanks and sincere gratitude to every girl student here, every boy student there, the student from senior class, all the students from class 7, 8, 9, 10. I am really thankful to all of you for giving me an opportunity to come and address you. I want to wish you all the very best and Godspeed. Jai Hind. ना हो कोई सवाल जवाब तो आप पूछ सकते हैं आकर बारी बारी से। To be a farmer, and as we know, I am a student of class 10, and I want to know that how I will prepare for this to appear exam in class 10. What's your good name, please? My name is Ashish. सो आशीष का क्वेश्चन है कि क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? Yes, sir. इज द क्वेश्चन राइट? Yes, sir. थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। In one line, my answer is, if you eat, if you drink, if you sleep with the burning ambition in your mind कि मुझे अच्छा करना है, सबसे पहले दिन हो या रात हो, हमेशा दिमाग में, दिलो दिमाग में गूंजना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है। अगर वो होगा तो आपको एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ही देखते रहेंगे। और इसके साथ आपने मेहनत करनी है, एक आपका रूटीन होना चाहिए, एक समय पर उठना, खूब पढ़ाई करना, खूब मनन और चिंतन करना, लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना। अगर यही भावना 24 घंटा आपके दिलो और दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर हावी रहेगा तो आप, और अगर आप मेहनत करेंगे और एक क्रमबद्ध तरीके से रूटीन के तौर पर लगातार अनवरत प्रतिदिन, अगर इफ यू वर्क डे एंड आवर, if you sweat it out, if you burn like a midnight oil, then you will definitely do well. Ashish, have I answered your question, please? Thank you. Sir, I have a small question, sir. Sir, when you are demotivated, then how you motivate yourself? Can you say your question again? Sir, when you are demotivated from study, then how you motivate yourself? Yes. It is a long journey. It is quite understandable and natural that you feel fatigued, you get bored, you get distracted, you get disillusioned during the course of your preparation. While striding along your path, at times when situation arises, you feel disheartened, you get demotivated. How do you overcome that? If you
to achieve your objective by having small, smart, measurable, achievable, time-bound and specific in nature, then time-bound manner, if your objectives one by one, you will keep getting success one by one, and even if you get demotivated, then the smaller successes which you have achieved in the past will motivate you, will propel you to continue your journey without getting tired. Secondly, at times you feel frustrated. You approach your senior, you approach your teacher, and they will help you in recalibrating your thought process, in invigorating you, in holding your spirit intact, in re-energizing you, in motivating you up and about again. Have I answered your question? Yes, sir. Thank you. Please sit with the boys. It's very, very heartening to see the spirit of a girl child. They are doing very well. They can do as well as the boys. They are not lacking in their spirit. If they put in their efforts, if they continue persevering, they can do as nicely and as well as the boys. So, big cheers to the girl child. Please ask your question. I am Ayushi Mishra from grade 9A, and today I want you to ask me a question. You have already motivated us so much, but can you tell me one thing, that if you have got such a nice ranking in army and such a great success, then how did you build the courage to leave that? I just want to how can we build our courage to move a path and to follow our passion? Sit down. Feel comfortable. She has asked a good question. When army was your passion, when you single-mindedly pursued your career, and you couldn't realize your full potential because of the unforeseen circumstances, you met with a failure. What did you do? I immediately changed track, because when I joined army, I aspired for becoming the chief of army staff. I aspired to becoming nothing short of a general officer. But when I saw that my ambition is dashed down by the ugly chain of events, then I took a deep breath. I recalibrated my thought process. I changed track. But basically, you always had the basic attributes, the basic potential to struggle, the basic merit, the basic intelligence, which took me as a colonel, which took me to the rank of colonel. Those latent potential, those virtues, those qualities were still intact in me.
So, if you continue to nurture your qualities and attributes, you may fail on one front. But if you change your front, change your direction, change track, and pursue a different career with the same set of qualities and attributes, and with the same dedication and commitment, if you push through, your attack will succeed on the second front as well. Have you understood this? So I re-energized myself, recalibrated myself, set goals for myself in the new direction, and with the basic parameters and the qualities that I developed as a child, which all of you are capable of doing, do it now or never. In Vidyapati school, it will give you the opportunity to hone your skill, to imbibe those qualities, to gain knowledge, so that in future you may not succeed on one front. So what? As Mr. Vidyapati himself proved, that he opened a new front and he succeeded. And today he is better than the best. Talia. The sure short way to improve English. 1. You should read every day, read more and more, so that you are always flooded with the ideas in your mind. Way to improve English is to keep reading intensively. Secondly, always try to think in English. Build up a vocabulary. Improve your word power. One good thing, one example, ये तालाब सूखा हुआ है. One way to say this, that the well is dry. Second way to say, there is no water in the well. Third way to say is, there is little water in the well. There is a difference between a little and the little. When you say and denote movement, then you use the little. The little money that I had in my pocket, I gave it to the beggar. When you want to say थोड़ा पैसा दे दिया, 1-2 रुपया निकाल के दे दिया, then you say I gave a little money out of my pocket to the beggar. जब आप कहना चाहते मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तब आप बोलेंगे there is little money in my pocket to help you out. Means there is no money in my pocket, I can't help you out. Have you understood this? तो एक बात को कहने का 5-6 तरीका है इंग्लिश में, वो 5-6 तरीका आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाओगे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में. During the course of your conversation, during the course of discussion, during the course of your speech and address, you should never be found wanting. English will improve in times to
You understood this? Thank you.